नहीं बाइक को तो नहीं मैं छेड़ा कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 मिनट ये टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में। छेड़ा कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 मिनट ये टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में। छेड़ा कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 मिनट ये टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में। छेड़ा कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 ये मिनट टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में। छेड़ा कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 ये मिनट टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में। छेड़ा कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ गया तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 ये मिनट टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में। छेड़ा कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ ओके जून। तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 ये मिनट टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में। कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ ओके जून। तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 ये मिनट टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में। कार जल्दी नहीं हिलती। कुछ नहीं वो आ ओके जून। तो वहाँ पे हो जाएगा जिसने हानिया वाली जो जाओ उधर उसने हानिया ने अपना नाम किस सही से गाना जहाँ पे गाना हो रही है उससे 2 मिनट या 5 ये मिनट टाइम लगता मुझे लगता ऑन होने में।
हेलो 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 ठीक है, नेट भी दोनों चल रहे। हेलो हेलो ठीक है, नेट भी दोनों चल रहे। हेलो हेलो ठीक है, नेट भी दोनों चल रहे। हेलो हेलो ठीक है, नेट भी दोनों चल रहे। हेलो हेलो ठीक है, नेट भी दोनों चल रहे। हेलो हेलो ठीक है, नेट भी दोनों चल रहे। हेलो हेलो ठीक है, नेट भी दोनों चल रहे। हेलो हेलो ठीक है, नेट भी दोनों चल रहे।
because of the security issues, our chair and co-chair, I'm assuming they are stuck up in security because of they cordon off all the area. As you all aware, the First Lady is here. So we will start our session with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Jazakallah khair. If I request all the audience, can you please keep your mobile on silent? As we all aware, the theme of this particular workshop is innovative reproductive health approaches. And the main theme of the this annual conference is sexual health research in the context of sustainable development goals and the universal health coverage. As a successor to Millennium Development Goals, the Sustainable Development Goal have set the wider, less quantified, but more ambitious targets and objectives with a particular focus on policy and governance. This Sustainable Development Goal 3 calls for ensuring universal access to sexual and reproductive health care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into the national strategies and programs. And we need to achieve the target by 2030. And for that, we have to set up the higher standards, and we need to make sure everyone should have access to those high quality services. But the ground realities are a bit different. There are 37 million women in South Asia particularly who give birth each year, where they don't have access to the essential care. In most countries of this region, the health systems are weak, along with the poor quality of care. There is added disadvantage of having insufficient trained health workers who are not properly equipped to provide critical life-saving care. The impact of weak healthcare system is compounded by broader factors such as poverty, poor nutrition, poor sanitation, and exposure to the communicable diseases. A range of essential services is necessary to protect and enhance women's health before, during, and after the pregnancy, and to give newborn a healthy start in life.
challenges of these healthcare system, equity, and high unmet needs for family planning that needs urgent attention to accelerate the progress to achieve sustainable development goal by 2030. Therefore, many reproductive health interventions face the crucial task of raising awareness about birth spacing, control, and other healthy options. In Pakistan, the contraceptive prevalence rate is about 35.4%, where 26% is the modern method, and the 9% are usually the traditional contraceptive methods. And the practices of these contraceptive methods influenced by cultural taboos, issues of social norms, values, practices, and unfortunately, the religious interpretations. Looking at these challenges and barriers in relation to sexual and reproductive health faced by individuals and institutions that strive to provide quality services in the remote and rural areas, today's session aims to address the following objectives. We all are here to spread the awareness about sexual and reproductive health services, to eliminate the cultural taboos about sexual health, and side by side, we can't achieve above two objectives without empowering our women by promoting health status of the family through family planning services and improving our contraceptive prevalence rate. That's the brief introduction of our session. And now I would like to introduce our honorable guests. And unfortunately, I told you before, because of the security issues of this area, due to the presence of First Lady, they all stuck up in security clearance. That's what I'm assuming. Our chair was, and I think she will be here, Dr. Taira Khalid. She is consultant gynecologist in Federal General Hospital. And our co-chair, Dr. Ali Said Mirza, and he said his introduction is he's a proud alumni of HSA 2012. And currently he's working as a public health specialist in World Bank. And our discussant, Brigadier Professor Dr. Ambreen Anwar, a very renowned gynecologist and a medical educationist. She has a very diverse background with a special interest in MNCH with special aspect of public health. She has got the opportunity to work all over the Pakistan, including the hard areas. And she also have worked abroad, especially in UK. And she is one of the best teacher and best mentor. And I'm very humbled and proud to say she was one of our teacher in PhD here at HSA. Ma'am, with your permission, should we start it officially? Thank you. Our keynote speaker will be here. He is also on his way because of the security. Can't be here on time. Right. Before starting the session, 2 ground rules. We need to keep the timings for the presentation, maximum 10. I will remind you after 5 minutes and then after 2 minutes, right? For the speakers. And question answer will be entertained at the end of the sessions. If you want to add up anything from the speakers and the ma'am and the co-chair. Yes, right. Before kicking off to the official and formal session, I'll be handing over to Ms. Arusa. This is what I would like to have. We all want to do something positive and productive. And this is, Fahmida Riaz said it very well in his poetry. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा. Thank you. And our first speaker is Ms. Arusa. She is a seasoned human resource HR organization development professional. She has over 15 years of experience, and currently she is working as a director people and corp communication. And she is also representing the DKT. Over to you. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. And thank you for this opportunity, HSA.
honestly speaking, I hope I'm loud and clear. Do I need the mic? Yes, ma'am. Okay, okay, I need the mic. Okay. Maybe you can have this. Okay, that's better because I want to be comfortable out other than the rostrum. All right. So, hello, is this on? इसको जरा please on कर दें. Okay, so. All right, thank you so much. And start बड़ा अच्छा लिया, share भी बड़ा अच्छा करनी है कर गुजरो. और जो मेरा introduction आप दे रही थी मैम, सबसे पहले तो this is my first time at HSA. And speaking in front of such, professionals, such academicians, health professionals, health specialists, my God, I mean, I'm overwhelmed. Let me just tell you that I'm not a health professional. I am not someone who is a public health professional or a doctor, because ये इतने सारे doctors हैं कि कुछ घबराहट हो रही है. मैं तो एक सीधी सादी human resource professional हूँ, जो कि out of my passion and out of I would say कि out of my experiences, I have been working at DKT Pakistan, which is another amazing organization. और मैं उसका थोड़ा सा quickly आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी 10 मिनट पूरे करूं, लेकिन बात भी पूरी करके जाऊंगी अपनी. और secondly, मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे कराना चाहूंगी. आई थिंक मैंने अपने इंट्रो में लिखा भी था कि more than anything, I'm a mother. I'm a mother of 3 children who has been through various miscarriages, who've had problems understanding the different methods of family planning, and here I am working for the cause. So I think that's the credibility of what I'm coming up with. Now, coming to the program Har Sehat. Before I move on to Har Sehat, I'll give you a very quick and brief introduction about DKT Pakistan. क्योंकि यहाँ कई लोगों ने मुझसे पूछा है DKT पाकिस्तान है क्या, आप लोग थैले लेकर आए, स्टॉल लगा लिया है क्या, बताएं तो सही. So basically we started our operations in 2012. So relatively हम a decade old organization है, and we are a private limited company, and we are an affiliate of an international NGO, which is DKT, based in US, and has its presence in around 40 countries. Now, what do? So basically, there are 3 arms to what we do. We provide access, जो कि अभी एक बहुत बड़ा issue आपने highlight भी किया, access to affordable and safe family planning and reproductive health products, as well as services. ठीक है? So एक तो हमारा आर्म हो गया products की availability. Second, हम community midwives और lady health visitors को support कर रहे होते हैं by establishing rural health centers for them. So that's our rural presence. And I'll tell you how big is our network. And third is we have a wide array of or different choices of reproductive and contraceptive products for both men and women. Motto बड़ा simple है, हम ये ख्वाब लेके आगे बढ़े हैं कि we want every child to be born in Pakistan who is wanted. So we want every child to be wanted who comes into this world. So that's बड़ा simple सा ख्वाब है, लेकिन simple कहने में है, करने में मुश्किल है. Products अगर quick मैं आपको दिखा दूं तो we have 2 key methods of promoting or taking the cause further is through the products, wide range of products for both men and women. Then we have a social franchise network, जो मैं कह रही थी, rural health centers जो हम develop करते हैं, जिसमें हमारे इस वक्त 1500 से ज़्यादा rural health centers हमने create किए हैं across Pakistan, and that's the map. And if you log on to our website, if you want to know more about us, we can be reachable. Plus, we are developing 200 more clinics in KP and in Punjab with the help of the Javan government. So through this network, we basically aim at providing safe and quality services, as well as provide products to primarily the rural women and the outreach of Pakistan. Now, why are we here? And what is Har Sehat that we are trying to promote and bring it out there for you? So Har Sehat is basically a digital platform that we are aim at developing, and uska jo pura ambit hai ya uska jo pura maqsad hai, is हमारा मकसद ये है कि we want to create a world, and this, by the way, this platform is primarily for the women,
And uska jo maqsad hai that we want to basically empower women so that they could live their life to the fullest. And I'll tell you a little more about this. Now, is platform ki खूबी ये है कि it caters to the whole reproductive cycle of women. That means starting from adolescence to adulthood. That means from puberty से लेकर के पूरा full cycle to menopause. तो वो सारी areas cover करती है. मोटो क्या है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का? खुद मुख्तार रहो, भरपूर जियो. थोड़ा सा डिजिटल स्पेस को हमने स्टडी किया. अगेन ये गूगल एनालिटिक्स एंड Hootsuite से ये सारा डेटा उठाया हुआ है. एंड दिस इज एज ऑफ February 2022. अगर हम डिजिटल यूजर्स देखें और वो इस वक्त हम सोशल मीडिया को टैप करके there is more data available, but just to give you an idea of how many women at the moment are using social media is 19.3, which is 20% of the total population. So there is a big, opportunity. क्योंकि अभी आप बात कर रही थी access as well as understanding as well as knowledge. तो ये दोनों चीजें हैं जो बहुत important है. तो looking at this data, it gave us an idea that an innovative approach to handling the social and reproductive issue of Pakistan is to go digital. और I think हमें कोविड ने ये तो सिखाई दिया है कि डिजिटल का जो स्पेस है, डिजिटल स्पेस हमें बहुत तेजी से और माइलेज और स्पेस दे सकता है. और स्पेशली अगर हम अपनी पॉपुलेशन ही का सेगमेंट देख लें तो अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन तो हमारी यूथ है जो कि इस वक्त डिजिटली सेवी है और डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करती. तो इट मेक्स द परफेक्ट केस फॉर अस टू गो ऑन फॉर दिस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा हमने अपने डिजिटल स्पेस को भी देखा. हमारे पास इस वक्त तकरीबन DKT Pakistan has around 15 digital media, social media assets, जिसको हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, यूट्यूब भी है, लिंक्डइन भी है और हर प्रोडक्ट का एक अपना पेज है. तो तकरीबन 15 सोशल मीडिया एसेट्स हैं. और जिसका अगर हमने थोड़ा सा बाइफिकेशन की तो अगर हम अपने सोशल मीडिया स्पेस को देखें तो ज्यादातर मेल हैं जो हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर है. 11% फीमेल है. तो एक तो ये रेशियो भी है, लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान का रेशियो देखें तो 27% फीमेल है. तो यहाँ पे एक गैप है और उसकी भी हमें पता है, हाईलाइट हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर जो लोग सेगमेंट या जो लोग हमारे पास इंगेज हैं वो प्राइमरीली मेन है बिकॉज ऑफ वन ऑफ आवर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर ब्रांड विच इज टारगेटिंग द मेन. सो हम इसके ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इस इनिशिएटिव के थ्रू, द इनिशिएटिव ऑफ हर सेहत, वी वांट टू बेसिकली एम्पावर women through the digital space to help them to have better insights into sexual and reproductive health issues, as well as we also want to sort of minimize the gender gap, especially in the space of social media followers in terms of our assets. So this is really going to help in bridging that gap. So Har Sehat is basically has two arms to it. The first arm is bringing in awareness. Now, how will we aim at bringing in awareness? Is we are going to have a 24/7 user-friendly chatbot. Now, this is going to be an AI-based chatbot, which is going to basically address various queries which are related to sexual and reproductive health that a woman faces through her life. Secondly, this chatbot is not judgmental. Usually, the kind of issues women face is they don't want to go to someone or talk to someone or even a service provider because they feel that they'll be probably judged by that other person, that human. So here this chatbot is like a sister I trust and someone which is not judgmental, can give you expert opinion without judging you. And third is that we are going to provide lots of blogs, vlogs, information, content linking to various websites where women will be able to have a lot of information about their sexual and reproductive health issues, a lot of issues that we go through. And we have done some background research to it as well. And even we came to find out, और जिनमें से मेरा अपना experience भी मुझे ये कहता है, plus many of my friends that I've been talking to and I've had conversations with,
कि जो हमने थोड़ी सी रिसर्च की उससे भी हमें यही पता चला कि इवन द अर्बन विमेन, अभी मैं अर्बन की बात कर रही हूँ, रूरल की तो आप शायद रूरल को ज्यादा पता हो, ये पता हो नहीं पता हो, मैं अर्बन की बात कर रही हूँ कि अर्बन सेगमेंट्स में भी बहुत सारी खवातीन को फैमिली प्लानिंग की सारे मेथड्स का नहीं पता होता बिफोर मैरिज, ठीक है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कोई है नहीं, एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू गो, if I have an issue which is related to sexual and reproductive health, who would I go to? I'd rather ask my friend or search on Google. तो सबसे बड़ा जो इंडिकेटर हमारे सामने आया हमारी अपनी रिसर्च का, वो ये था कि सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर दीज वुमेन इज द इंटरनेट। अब हमें ये भी पता है कि इंटरनेट पे हर चीज जो लिखी होती है वो सही नहीं होती। यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस एंड एन ओपिनियन। तो एक तो सेगमेंट ये है, ये बहुत बड़ा गैप है। सेकंड जो हमें चीज पता लगी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर गर्ल्स इज यूजुअली आइदर देयर मदर्स, देयर एल्डर सिस्टर्स और देयर फ्रेंड्स। गायनेकोलॉजिस्ट के पास यूजुअली खवातीन तभी जा रही होती हैं ये सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जब वो शायद प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ठीक है। और सॉरी टू से जो हमारी जनरली गायनेकोलॉजिस्ट की जो टेंडेंसी है इज दैट दे डू नॉट डिस्करेज प्रेगनेंसीज। समहाउ उनका माइंडसेट, ये मिजाज, या यू नो इट्स बिकम सो कमर्शियल कि दे डोंट रियली केयर अबाउट the woman's health. Sometimes they don't recommend, easily recommend family planning choices or issues. ये इतना time नहीं दे पाती whatsoever. तो ये मैं urban population की बात कर रही हूँ। तो एक बहुत बड़ा segment, ये बहुत बड़ा gap है हमारे पास. So that's why we felt that this is very much needed. The third aspect is access. Now that they have the knowledge, how will they have access to these products? So we are going to have an e-commerce platform, where all these products will be available through the e-commerce. Concealed deliveries will be provided to all these people who would order from our e-commerce platform. Secondly, there will be a telehealth facility. And this facility is to cater to our rural women and women who need some consultation, but who cannot go to a service provider or a healthcare professional. So through telehealth, we'll be giving consultation at home. Secondly, stuff like period pill reminders, as well as, for example, Femila, जो daily की जो pill है, अगर उसका reminder आ जाए, और 30 डेज तक एवरी डे एक रिमाइंडर मिलता रहा उस औरत को, 30 डेज के बाद ये जो भी 28 डेज का साइकिल है, उसके बाद उस औरत को ये इंडिकेटर आ जाए कि शी हैज टू ऑर्डर अगेन, और मे बी एन ईयरली डिलीवरी उसको मिल जाए, तो वो शी कैन रिमेन एट हर कंफर्ट एंड थ्रू दिस डिजिटल ऐप, थ्रू दिस डिजिटल सपोर्ट, शी कैन हैव एक्सेस टू ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. प्रेगनेंसी, स्टेज वाइज प्रेगनेंसी एडवाइस, ब्लॉग्स, there are a lot of things, the do's and don'ts. So that will also be there as a part of this platform. Secondly, e-commerce as well as quick commerce. Quick commerce, by the way, is the thing that you can get things within like 20 minutes through, जैसे Food Panda है, या Panda Mart है, या Crave Mart है. A lot of platforms now have come up. So using those platforms, providing quick deliveries to people, so that's also going to be part of this digital platform. So it's going to be a complete platform aiming at primarily empowering women. And what we are going to do is quickly going through the digital journey of a woman, basically not just a woman, but any e-commerce user or any other platform. If you look at the digital journey, you can see that there are various touch points that are available. And we are going to tap into each touch point to continuously seek and understand that what is it that they want, how is it that they want, and how we can continuously improve our product. So the monitoring and evaluation part will be an ongoing process for this project. And finally, these are some of our milestones that we are aiming at achieving. And with this, I come to the conclusion of my segment. I hope
I didn't overdo it and was able to put my point across. And I think the Q&A will be towards the end. So thank you so much. Thank you, Health Services Academy. And thank you, the chairs. It was really nice to be here and to come and present our project. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Arusa. And believe me, it doesn't look like you were presenting first time. And that's the beauty of public health. It embraces all the professionals from every walk of life. And I'm sorry, I just realized I just forgot to introduce myself. I'm Professor Dr. Farah Rashid. I'm head of department at Federal Medical College and PhD fellow at Health Services Academy. Our next presenter is Ms. Amna Noor. She is econometrics, and she had just submitted her PhD thesis in economics. She's doing it from Quaid-e-Azam University, and she is currently visiting faculty member of various universities in Islamabad and Rawalpindi. Over to you, ma'am. This one. Assalamu alaikum. I am Amna Noor, and currently I am working with NIPS as a researcher. And the topic of my presentation is impact of place of delivery on neonatal mortality in Pakistan by using PDHS in context of SDGs. They are co-authors, Dr. Zahid Asghar, Dr. Aisha Sharaz, and Dr. Rabia from NIPS. Introduction. The reduction in the neonatal mortality rate. The reduction in the neonatal mortality rate is a primary concern of current international public health services policies, as it is the highest mortality rate in globe, especially in South Asia, as in Pakistan, India, and Bangladesh record 1/3 worldwide death rates, neonatal mortalities. Reducing neonatal mortality is priority of SDGs. Goal 3 of SDGs, good health and well-being, especially, and target 3.2 specifically reducing the neonatal mortality by 2030. A target that up to 12% per 1,000 live births in neonatals, and 25 deaths by per 1,000 live births in under 5 ages by 2030. Place of delivery is crucial indicator of reproductive health care, as it is assumed that the health care received in place of delivery within facility is by maternals are during pregnancies, during delivery and newborn is provided by skilled trainers. Globally, the newborn death declined from 5 million in 1990s to 2.4 million in 2019 by given by WHO 2020. The neonatal mortality rate is considered one of the most significant discrepancies in all statistics among developing and developed countries, as it is 6 times greater in developing countries than in developed countries. Neonatal mortality is 42 deaths per 1,000 live births in Pakistan, and it is highest in Punjab, that is 37% deaths per 1,000 live births given by PDHS 2017-18.
Objective of my study. The objective of my study is to determine the association between place of delivery and neonatal mortality for fostering the process of SDGs 2030 agenda. The second objective of the study is to determine the association between the selected child characteristics and mother's characteristics with neonatal mortality. The study also tried to explore the disparities in province in the case of neonatal mortality and place of delivery among pregnant women. And neonatal mortality at regional level, here we have measured the neonatal mortality with reference to place of delivery in Pakistan at provincial levels. Like in Punjab, we have seen that the neonatal born outside the facility have occurred mortality rate 76%, while the neonatal born within the facility have causes 31% deaths. While in Sindh, and this is the highest mortality rate among provinces in Punjab, and in Sindh, neonatal mortality rate is 49% when the newborn delivered in without the facility, and it is 30% when it is delivered within the facility, and likewise the other provinces. Now I have run binomial logistic model to measure the impact of place of delivery and other mother's characters, child's characters on the neonatal mortality in Pakistan. From the odd ratios, actually I measure neonatal mortality. This is deaths per 1,000 live births. Fine, and I categorize it if the neonatal survive within 28 days of delivery, then it categorized as 0, otherwise 1. Fine. If it's not survived, it is 1, otherwise 0. Place of delivery. Place of delivery is also categorized within 2 categories, 0 and 1. If the delivery is taken place within facility, it is categorized as 1, otherwise 0. Like we have given child characteristic, birth order base categories, order 1, first order delivery, then second to third order, and then 4 to 5 and 7+. Sex of child. If the newborn is girl, it is taken as 1 and male for otherwise. Size of child. Base categories our base categories is small size child, average size child, and large size newborn size. And likewise, if age of the mother. Now, from the research, odd ratios shows that place of delivery has negative association with neonatal mortality. If the child, if the delivery takes place in a within facility, the new chances of newborn to chances of neonatal mortality is 0.84 less likely to experience neonatal mortality. Otherwise, it is positive if the child deliver outside the facility. Birth order. We have seen that as the birth order increases, like 4 to 7+, there is a positive association with neonatal mortality. That is, as the birth order increases, the neonatality chances of neonatal mortality will also increases. This shows that with a higher order, the unwanted pregnancies or the prematurity of pregnancies chances will be rise. Sex of child. It is also seen in previous study. If the gender of child is male, the risk of neonatal mortality is high. However, if the sex is girl, there is 0.65 less likely chances to go for neonatal mortality. Size of child. Size of child also shows that for a smaller size, there is a positive neonatal mortality.
If the average size of a child is large, there is less like 0.58 chances, less like chances to experience neonatal mortality. While in age, we don't have such a significant level. Mother education. We have also seen educated mother faces less likely chance of neonatal mortality as compared to non-educated women. Mothers employed. If there is a working woman, the chances of neonatal mortality is higher than the woman who is not working. We have seen that odds of 1.4 more likely to experience neonatal mortality if the woman is working. Resident region. Now we have seen that as compared to Punjab, if the mother is living in Sindh, KPK, Balochistan, other regions, there is less likely chances to experience neonatal mortality. Now we have discussion according to our research. We have seen that place of delivery has been found to be an important indicator for children born in health facility experience a low risk of neonatal mortality. As in place of delivery with facility, there is a skilled trainer worker and equipment well equipped, and there is also consider hygiene issues. Region-wise disparities have also found like that. We have seen from our graphical presentation that 76% neonatal mortality occur in Punjab, while it is least in Balochistan and KPK, Khyber Pakhtunkhwa. Neonatal mortality was found high in the case of higher birth order, male child, and small size child. It is also concluded from the study that neonatal mortality is lower for educated women and non-working women. Recommendations according to my study is that the government needs to strengthen and enhance the primary care to achieve the SDGs goals. Government should accelerate equity in access to healthcare by introducing advanced technology and ensuring access to the health facility when needed. Awareness of maternal and child health complications during pregnancies and delivery and examination after delivery should be taken. Programs should be developed for the training of service providers and midwives for skilled delivery. As we have seen in KPK and Balochistan, the neonatal mortality rate is high where the delivery is taken place within facility. And there is a need to promote the coverage and quality of maternal and child health care in reducing the neonatal mortality. There is also need for a broader approach to child health programs to enable further reduction in neonatal mortality in Pakistan so that we can achieve the SDGs goal 3 by 2030. Which is 12 deaths per 1,000, while in Pakistan it is still 42 deaths per 1,000 live births. Educating whole families about birth spacing and efforts to improve the health facilities. Ensuring the availability of quality health services for the small and safe newborns. We have seen from our results that when the size of child is small, it has more likely chance to go for neonatal mortality. Thank you, ma'am. Thank you very much, Ms. Samna. Our next presentation is Ms. Neha Mankani. She is a community midwife and a public health practitioner with over a decade experience in sexual and reproductive health. She is also a founder of Mama Baby Fund in Pakistan. Currently, she is a regional coordinator, Southeast Asia PUSH Push Campaign. Over to you.
The Assalamu alaikum. So I want to talk a little bit today about midwives in complex emergencies, or kitna important hota hai for midwives to be mobilized when it comes to times of natural disaster and crisis. And I have a lot of experience. For many years, I've focused on reproductive health in crisis situations. I'm a community midwife by training, so I practice with you on ground. In 2000, I think when I really started thinking about what happens in Pakistan in these kind of disasters is in 2000, last year actually, 2021, in October 2021, there was an earthquake in Harnai in Balochistan. So wahan hum mobilize hoke gaye the to see what women need. And in that time, I think I was there for 3 days, and I saw that literally the women, pregnant aurtein jo hoti hai, unki itni specific needs hoti hai in these situations. And women would tell me things like, you know, that that the wall fell, or मैं अपने बच्चों को, I had twin babies, मेरा C-section हुआ था 6 घंटे पहले, और मैं उनको लेके drag करके गई दरवाजे से बाहर. Like the pregnant women and newborns have such specific needs, and in complex emergencies, obviously they become much more difficult. So one of the things that I work on is a push campaign. This is based with the International Confederation of Midwives, and it's a campaign that is working on advocacy for midwives, midwives' ki rights, midwives ko aage lana, and trying to help people see that, you know, midwifery care is actually very important. So basically, everyone knows about the floods in Sindh and Balochistan, ki kya hua hai. And this means what the UN estimates were, that there were 650,000 of the women who were impacted were pregnant, and out of that 75,000 were due to give birth right after it happened. This photo was taken as soon as the floods hit. I went to Dadu, और हम एक boat में बैठ के गए. दादू और जोही के बीच में जो 10 minute का road था, it's become a 1 hour की boat ride. तो हम बैठे उस boat में. This man was in the boat. This baby had been born, I think 6 hours before. और वो उसको कहीं ले जा रहे थे. They got in the boat at 4 o'clock, and they said जब हम घर पहुंचेंगे, it's going to be around 10 o'clock at night. That's how much of the land is underwater in boats. So ये बच्चा जा रहा था boat में. There was a part that the boat couldn't go, so they're walking through it. So when these natural disasters happen, what we see is that health centers, one of the first things that happens is health centers are broken down, they're swept away. Healthcare workers could displace ho jate hain. I'll show you in the next slide what I think I'm talking about. Distance to care is increased, and there's no infrastructure. Like, agar aap boat pe sakte hain, 600 rupees ki, you can go. But the first, again, Dadu was like maybe 4-5 days after things got really bad. The first day I was there, I saw 3 cases of maternal mortality where, you know, obstructed labor, wo boat mein la rahe the, bahut time ho gaya, and the woman died. But also things like that can be easily managed, like PPH, or, you know, women are getting sepsis because they're delivering in tents, they're delivering in the water, they're delivering wherever they need to. There's lots of cases of induced abortion, or even if not induced, like incomplete septic abortions that can be treated, but they weren't able to because of the places they were in. Disruption in family planning. This we've seen for many years. I worked at a refugee camp in 2011, or wahan hum dekhte the ki women had gotten implants, and when they got displaced, there was no one to take those implants out. So ye cheezein bhi hoti hai. Lots of malnutrition, sexual violence is a big thing. So usko manage karna is very difficult if there's no healthcare providers around. IDP camps mein bahut sexual violence hota hai. And then we also started seeing increased early and forced marriage because it's all transactional. So people jinke paas nahi hai paise, kuch bachchiyon ko, they would sell them into marriage for transaction in these emergencies. So this is the first camp I went to in Thatta. Ye pani aa gaya sara. Ye jo second wala hai site, that is Indus's Indus Health Network has a site in Sevan. This is the hospital. This hospital will not be functional for another 8 months. And yahan log aate the at least 200 people every day. So where do they go now? Nowhere, because their whole facility is down. Ye upar aap dekhenge, this was a village where people had started to go home. Hum jahan the, aur diwaron pe, BHU ki diwaron pe aapko dikh raha hai kahan tak aaya hua tha pani. And this is the same baby in the boat going to health. This is some of the stuff we saw when we were there. So what we need is basically prevention of, you know, midwives on ground to prevent sexual violence, response to need of survivors. Itne hame STIs, ye is tarah ki cheezein dekhi, you know, lots of reproductive tract infections, STIs, but also
vaginal infections, things that can be treated. Prevention of unintended pregnancies, obviously, support with health education, family communication, and timely referrals. Jab referral ki zarurat hoti hai, someone needs to understand danger signs to get women out there. So what we did was, this is a midwife who works with me. So hum dono ne, first thing we did was we started making clean delivery kits through the organization I work with, which is Mama Baby Fund. So Mama Baby Fund made clean delivery kits, और उसमें हम बच्चों के कपड़े, something for the mother to eat, vitamins for 2 months. We put clean blade, misoprostol to prevent PPH, and just some stuff for the baby like diapers, towel, ये सारी चीजें हमने डाली. उसके अंदर a tarp ताकि अगर वो घर में deliver करे उनके पास कोई जगह हो. So we started in end of August. I think end of October we're over 11,000 clean delivery kits. Then we got on ground, or between the two of us now, we've done, I think, 18 camps. Just maybe we've seen more than 1,500 women, and we do antenatal care, we do deliveries, we do referrals. So these are all the places we've been to. And one of the things we found in this was that, and it was actually very surprising to me because I've worked with midwives, I'm a midwife, that in all of these 17 sites we went to, hame ek midwife mili who had mobilized. Literally, there were no midwives on ground. There were, everywhere we go, we'd see some dai, someone would come out and help us, hame translate bhi karte the, log madad karte the, koi midwives hame nahi nazar aaye. And it was really creating a loss of continuity of care, because in these kind of sites, what you need is a community-based healthcare worker who will mobilize and help people at that time. So we started speaking to midwives. Like, I have a network of midwives. I started speaking to them, and this is what. So this is a case that's actually very interesting. This was an IDP camp of, I think, 8,000 people in Dadu that we were doing a clinic at. And yeah, this woman came to us. She was pregnant with twins. She was very sick. I think she might have had malaria. And uske dono jo twins the, their heart rate was very high because she had fever. And I said, look, we'll arrange an ambulance. We'll get you out there. And she said, when I live in an IDP camp, I don't even have anywhere to keep my current kids. My hospital ja nahi sakti, ye bachche agar mar gaye, that is their destiny. Like, I can't do it. And this is the kind of interruption of care that we see. So we spoke to midwives and they said, look, we don't have any resources to mobilize. Like, how do we mobilize? We don't have medicines to give people. We haven't received any government support. No one has helped us mobilize. You know, log doctors ko paise de dete ki aap jaye, aap camp kare. No one has helped midwives mobilize. But also, they don't have a network. Like, they don't have a network that mobilizes them in these kind of situations. They don't feel at all confident in their skills because CMW ki trainings, like I've been through a CMW training, aapko ek dafa training milti hai and that's it. You become midwife once you're midwife, for the rest of your lives, aapke skills khatam ho jate. There's no connecting course. They themselves were affected, their houses drowned, so they also had very limited mobility. And I think one of the biggest thing is they wanted to help, but if they don't consider themselves autonomous healthcare providers because they've never gotten that confidence कि हम कर सकते हैं खुद निकल के कुछ. So these were some of the issues that midwives faced in mobilization. And we all know what the need is, that if we had the kind of midwifery coverage we need, we would, these are the number of deaths we could avert. Everyone knows the global shortage, and Pakistan made the move that's happening with midwives is interesting because we have 45,000 midwives, but there's a move towards a BSc program. But the CMWs can also be kind of worked with if you bridge करके उनको भी हम एक like अच्छा cadre बना सकते हैं. And the status of midwives, you've seen it. I do Southeast Asia work, South Asia work for India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. में जो मैं midwives के साथ काम करती हूँ, it's all of the same, that their work is really undervalued. So these are the advocacy hours. This is the camp we had in Jacobabad where these women have got their postpartum babies to Jahan for a checkup. And so our advocacy hours are on behalf of midwives and push. We want that, you know, there should be increased regulation and support, because in times of crisis, we could have averted a lot of maternal deaths and neonatal deaths if we were able to mobilize this cadre. They should be able to practice their full scope of care. Now, no, in a lot of places, schools bhi band ho gaye hai, bans bhi lage hue hai midwives ki practice pe. And also midwives seat at the table. Abhi bahut hamari strategy building ho rahi hai, but I know that, I mean, no one has ever asked me. I have 10 years of midwifery experience, probably more on-ground experience than most midwives. I know no one has ever asked me for any advice. So resource allocation, midwifery association for the strengthen karenge, to midwives be strengthened only. And the increase in the education quality jo hoti and post-education practice.
And I think one of the other really important things is gather community support for midwifery services. That people need to know what a midwife is. कि ये है cadre और वो आपको support कर सकती है इन चीज़ों में. So these are some of our partners. So basically, that's our story. I wanted to share this experience because I feel like there's a lot that we can learn. Climate change is a really major thing. Abhi, one of the places that I work at is in Karachi, an island hai off of Karachi. It's called the set of island, Baba Bhet and Shamspir, which are islands, the population is 200,000. They have access to zero healthcare facilities on all of these islands combined. So I do a clinic there. And that's another, I feel like with climate change, there is more of a need. There's a climate affected community. They don't have any money anymore. And there's a need for community-based solutions to come out for maternal and infant health. So thank you. Thank you very much, Ms. Neha. This was an eye-opener presentation, I believe, for majority of us. So-called, we are in 21st century. But looking at the ground realities, looks like we are still in Stone Ages. And your presentation again emphasized the need of strengthening our primary health care. And I think this is the only way forward. With due permission, sir, can we take the question answers before you? Right. The house is open for the question answer, please. Can you please pass the mic? I am Dr. Nasir Mohideen. I have been working as DG in the Ministry of Health. My first question is to the lady presenting from DKT. I just want to know that ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हर सेहत का, इसको कहीं पायलट किया गया है अभी तक या नहीं, और उसमें अगर पायलट किया गया है तो उसमें रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है और स्केल अप करने का इनका क्या प्रोग्राम है. My second question is to the lady presenting from NIPS. That was actually बड़ा surprising सी finding है कि पंजाब में और सिंध में जो neonatal mortality है वो सबसे ज़्यादा है as compared to KP and बलूचिस्तान. जबकि हमारा जो health infrastructure है और availability of doctors है या trained medical force है, पंजाब में सबसे ज्यादा है, हाफ ऑफ पाकिस्तान इज देयर, और उसमें डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं. सिंध में भी नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज गुड एनफ. बलूचिस्तान में टेरेन जो बहुत स्कैटर्ड है, हेल्थ फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे मिलते भी नहीं हैं, बट वहाँ पर नेटल मोर्टेलिटी बहुत कम है. तो इसको जो है ये रिसर्चर हमारे जो है ज़रा बताएं कि वो इसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं. माई थर्ड क्वेश्चन इज टू नेहा. नेहा, so far as I understand, ये CMWs जो हमारे पास कुछ प्रोड्यूस हुई हैं पंजाब में, सिंध में, वहाँ पे, लेकिन so far as I know पंजाब वालों ने CMWs की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दी है. They thought that it is no more required. लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो तो CMWs पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है, और आई अंडरस्टैंड कि श्रीलंका का जैसे एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्किल बर्थ अटेंडेंस से अपना मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम कर ली है. आई एम फॉर इट. मतलब मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि मैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में रहा हूँ, तो आई एम इन द फेवर ऑफ CMWs प्रोडक्शन. लेकिन आई डोंट नो इफ यू आर वर्किंग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्पेशली द पंजाब गवर्नमेंट, कि उन्होंने CMWs प्रोड्यूस करना क्यों बंद कर दी हैं. देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स, डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स, जो CMWs को वहाँ पे रखना चाह रहे हैं और 24/7 सर्विसेज BHUs में, RSCs में देना चाह रहे हैं, बिकॉज प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, यू नो. लेकिन पंजाब वाले जो हैं, दे आर मोर इनटू प्रोडक्शन ऑफ LHVs as compared to CMWs. So I don't know if you are working with the provincial governments, and how do you respond to this Punjab policy? Thank you. Please.
approach to that or primarily target करना चाह रहे हैं women को, women sexual and reproductive health. So we have substantiated data. Plus, we are for this specific project, we are also conducting some surveys. And going forward, we'll be doing focus groups. And as I said, that this is a digital product. The beauty of any digital product is that it's constantly and regularly feedback ले सकते हैं और उस feedback को बहुत अच्छी analyze करके और अपने product constantly upgrade कर सकते हैं. So this is something which is ongoing, but I think whatever that we have at the moment gives us enough encouragement that we should embark upon this program. Partners and scaling up those programs. I think this is something that we are looking into. Although we are in talks with some organizations, and one of the key objectives of coming over here was to connect with people working within the same space and taking in groups from here and ensuring that हम यहाँ से ऐसी चीज़ generate करें जिसके लिए हम partner कर सकें, क्योंकि at the end of the day we are all working for the same cause. So हम मिलके उसी cause के लिए आगे काम करें. So I think हमारा objective बड़ा clear है. We know that without collaboration, without partnership, and without taking more people on board, this agenda cannot be taken forward. And this is most of these other motivations are where other than events are taken place in some or on the way of activity. When the issues of hiring most probably to be given. And astonished as there in Punjab, the number of facilities are provided. I think studies are reluctant to facilities and which have I researched. And the most astonishing is that in KPK, Khyber Pakhtunkhwa, but 48% of mortalities are taking place in health services. Where the cases are different, while 23% then in Pakistan, cases are taken or on the way of facility. So, what Probably has to taken here is to clean their device or as a service provider or monitor them. Actually, are they going house to house to encourage them to go in service places or health facilities or their services? Non-formal labor. They are related to labor, unskilled labor or non-skilled labor, which is domestic work or other than hard work labor. These are the major causes. Well, one thing I can, I think, support you that regarding KPK, lesser mortality, because the roads are extremely good. I worked in KPK and I worked in all the three provinces, Punjab, of course, and in Quetta as well. The road structure in KPK is brilliant. So you reach from one place to the other within 1 hour, or I don't think 1.5 hours.
just 1 hour. So that is one thing, that you reach the facility. In Punjab, lot of work on the GT road, and I'm a gynecologist, by the way. And on the GT road, there are so many private clinics that a delivery takes place, and then obviously to ship the baby from there to somewhere else, if already it's not pre-planned or the health alert is not raised, then it's an issue. And these are the golden moments. They're lost, and it's lost. Moreover, iatrogenic early deliveries, preterm deliveries, is one of the major cause of neonatal mortalities. And with medical disorders and private setups and lack of antenatal care, वो सारे जहां ने पैदा में दस्ताने, तो आपको पता नहीं है कि कौन फाइनली कल्प्रिट है, मगर ये सब फैक्टर्स मिलके पंजाब की neonatal mortality और maternal mortality में ला मुहाला शरीक। जी आपके क्वालिटी ऑफ केयर अगर आप कंपेयर करें, जी जी ठीक है, और जो हेल्थ सही कह रहे हैं, लेकिन सब बात आप देखें और एज कंपेयर टू नहीं, वहां पहुंचना भी पड़ता है ना, टाइम पर पहुंचना पड़ता है। अंडर रिपोर्टिंग तो हो सकती है, नहीं सर, आई वर्क इन 3 parts, मुझे पता है। बलूचिस्तान में नहीं पहुंची, जो घर पे पहुंच अब आपकी स्टैटिस्टिक्स में आ गई, ये बात ठीक है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो वक्त पर पहुंच जाता है। लेकिन पंजाब में फॉलो अप का मतलब, मैं लाहौर में काम किया है, मैंने खारिया GT रोड पर काम किया जो हब है, और मैं पिंडी में तो खैर है ही है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैल प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि बेबी या माँ को वक्त पर निकालना, उनको एक प्रॉपर फॉलो अप देना, लेज ऑन करना, इट्स अ बिग नेटवर्क यहाँ पे आके। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब सही है, लेकिन जो maternal mortality में मेरे फिगर्स है, देखो, thank you. I actually wanted to add something to this as well, because part of हमारे कुछ midwife-led units जो हमने खोले is in South Punjab, and I think South Punjab is also actually very different. वहाँ dye culture बहुत ज़्यादा है, and जो सबसे weirdest malpractice that I've seen is in South Punjab, where lots of people, you know, like दाइयाँ veterinary oxytocin use करती हैं, बड़े-बड़े वो vials inject करते हैं, then they do things like, I've met so many healthcare providers, चाहे वो dispenser हो, nurse हो, they're all doing C-sections. So obviously इसमें चीजें तो बहुत बिगड़ती है. So I think there's a lot of malpractice, and there's a lot of South Punjab, like especially the Saraiki belt, is very interesting when it comes to maternal health. बहुत उनके practices strange है. It's very different from North. It's very interesting. Yeah. वो भी बहुत काफी ज़्यादा. And in terms of जो आपका सवाल है, thank you for definitely for supporting midwives. बहुत कम लोग मिलते हैं जो करते हैं support. I absolutely am not in agreement with this policy in Punjab, because as I was mentioning, हमने midwife-led units खोले हैं. Then South Punjab, then Kashmir, then Sindh, and they have been doing really well. Midwives antenatal से लेके postnatal delivery सब कुछ खुद करती है. And like Shukar, you know, in 4 years, we haven't seen any maternal mortality. बहुत अच्छे से काम करते हैं if they're trained. So Punjab mein what's happened is they've shut down all of the government schools. Private schools are allowed to work, and but midwives are not allowed to practice independently अपने clinics में anymore, which is a big loss. So part of हमारी advocacy ये है कि वो जो बन गया cadre 40,000 जो भी है, अब उनको आप abandon तो नहीं कर सकते, but this is the narrative कि वो उनको abolish कर दो, अब हम undergraduate midwives बनाएंगे, but जो undergraduate होगा वो नहीं निकलेगा in these kind of emergencies to work on ground, is my thought. knowing that श्रीलंका का एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, we can have an example. Presidents हमारे पास मौजूद है. बिल्कुल. इसके अलावा जो है, I know many of the organizations, one of the DKT जो एक organization है, they have done a clinic, और उनका एक्सपीरियंस है कि CMWs एक्सीडेंट करती हैं, पोस्टमेट करती हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देती हैं, सेफ डिलीवरीज करती हैं, they are equally good. So I don't know if you are working with Punjab government to continue production of CMWs. What is the issue with them? The issue is just this ना कि उन्होंने कहा कि वो community based हम चाह रहे थे वो लोग करें, deliveries उन्होंने नहीं reduce की maternal mortality the way we needed them to, but that's because they didn't have any support.
They didn't have any support after इसके they अलावा I think graduated. you need to work with nursing council as well. कि that's वो true. जो practice की जो इजाजत है मेरा ख्याल nursing council ने something With- key matters. जी Midwifery by HSA is actually very active, and we are in the process of establishing जो undergraduate midwifery है, और ये I think बहुत बड़ा step होगा towards adding to the pool of midwifery. और पंजाब की तरफ, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही दे रहा है midwives, और ये undergraduate midwives नहीं होगी. It's a cater for 4 years. इसमें 2 years basic nursing होगी, जो कहीं भी होती है, और उसके बाद फिर 2 years जो है वो special skills in midwifery. So it's not in those terms undergraduate. I just want to teach it already, but सही कह रहे हैं. जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है, हमने एक सर्टिफिकेट लेकर रही थी और मैं आपसे बात करी थी कि अभी करवाने वाले हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे इनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, प्राइवेट इनका एस्टैब्लिश करना, वो जो उन्होंने बात की कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी तो वैसा मिक्स वो जब आप डॉक्टर्स एस्टैब्लिश करते हैं अपने क्लिनिक्स में जॉब करते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा इशू है कि ऑब्वियसली कैसे एस्टैब्लिश करें. गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट एंड ब्रिंग अप पोस्ट फॉर देम, और पेरिफेरी में बहुत बड़ा वैक्यूम है जहाँ पे लो कॉस्ट पे बहुत अच्छी सर्विसेज. डॉक्टर्स आर एक्चुअली नॉट ट्रेन्ड टू फॉर लेबर सपोर्ट, जो 8 से 10 घंटे का काम है. तो हम जान कर सकते हैं, ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ कीजिए इंशाल्लाह. मैम अगर हम इसको ऑब्वियसली एक वैक्यूम देने का ना फिर जी मैम, should we move on to the, because it's a very comprehensive question answer session. Thank you very much, sir, for raising a very and pertinent questions. We are very honored to have our keynote speaker here. सर आपका क्या तारुफ कराएं? आप अपना तारुफ हवा बाहर की है, तो काम नाम ही काफी है. डॉक्टर बाबर तस्नीम शेख, a brief introduction. दरिया को कूजे में बंद करते हैं. Dr. Sheikh has almost 25 years of experience in public health, and over the years, he has developed his expertise in health systems and policy. His career is blend of academics, research, health system, and policy development. He has worked for the academic institutions like Aga Khan University and Health Services Academy, and currently serves as adjunct professor of various institutions across the country. Higher Education Commission of Pakistan and Pakistan Medical and Dental Council has recognized him as MS and PhD supervisor and examiner. His health systems and policy research work is extensively disseminated, more than 135 peer-reviewed publications in both national and international index journals. In 2016, he was listed in the most productive scientist of Pakistan by Pakistan Council for Science and Technology, and recently recognized by the Stanford University, US, amongst the 114 top scientists of Pakistan based on their publication and citation. At present, he is the Director Technical and Deputy Chief of Party for John Snow International Islamabad. Sir, please share your experiences. Thank you, Farah, for this very humbling introduction. Assalamu alaikum and good afternoon. It's a pleasure, an honor, and a genuine feeling of happiness to be back at HSA as always, because this is the institution where I have served twice, once as a faculty member and second time as the technical lead of the think tank that we established here for health and policy population policy matters. My today's keynote speech should not have a PowerPoint actually, but I was asked to make a PowerPoint. तो मैंने जबरदस्ती बनाई है PowerPoint जो है. Since last few years, I am somehow transformed
and I'm not very fond of showing slides to the audience, wo students ho ya is qisam ka koi aur forum ho. It's always better to have an eye contact and more exchange of views and information. But anyways, chunki format aisa hai, so therefore I thought it's a good opportunity to recap this beautiful session, jiska title hai Innovative Approaches for Reproductive Health. So when I was asked to come as a keynote speaker for this topic, so I started thinking on two words: innovative and reproductive health. So my today's keynote will be on two parts. One will be what actually is reproductive health, because this word has been used so much in Pakistan and around the globe and has been abused and misused in Pakistan, especially, that we have actually lost the connection with the spirit of reproductive health. So for the sake of recapping this discussion जो आप यहाँ पे पिछले 1-1.5 घंटे से कर रहे हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैंने भी कुछ सोर्सेज से चीजें इकट्ठी की. एक तो फॉर द स्टूडेंट बॉडी जो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी की है, इट इज गुड टू शो देम कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, what is, how it is packaged, what is present in the basket of reproductive health. When we talk about reproductive health, तो ये हमारी basket में क्या क्या होना चाहिए, और फिर इसका लिंक बनाने की कोशिश करेंगे in today's times, how relevant reproductive health is now in our lives as of today, the way health system has shaped up in Pakistan, especially after the exhaustive 2.5 years of pandemic, the new jargons coming in the health system, uske saath iski relevance kya hai, and what would be the way forward, isko leke chalna kaise aage Pakistan mein. And then I'll come to the last part, innovative hai kya, humne innovate karna kya hai reproductive health mein, or what, is there any room for innovating? So this is how my presentation will flow, and at the end I will be happy to take questions if there are any. Next please. तो ये पैकेज है, अब ये मैंने नहीं बनाया, I have taken it from some source and the source is mentioned at the bottom of slide. ये पैकेज है, this is called reproductive health package for the students of Health Services Academy and others who, मैं भी एक student हूँ reproductive health का. ये पैकेज है जी. Now इस पैकेज को ज़हन में रखें, और वो तमाम presentations जो मेरे respected colleagues ने की हैं यहाँ पर, उनकी प्रेजेंटेशंस को थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल करें और इस सिस्टम के ऊपर एक नजर दौड़ाएं और फिर सोचें कि क्या ये पैकेज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हैज दिस एक्चुअली बीन ट्रांसलेटेड इनटू सर्विसेज कैपेसिटी एंड इज देयर अ डिमांड फॉर दिस पैकेज. That's also important. So ये package, I'm not going to read my slides. So this is a presentation which is going to stay here and you can all get it from the copy from here, soft copy. Next, please. अच्छा, तो अब करें क्या इस पैकेज का? Now, कहानी थोड़ी सी चेंज हुई है पिछले कुछ सालों से, और we have started talking about universal health coverage. Reproductive health की universality अपनी जगह पे, और अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आ गई. सो व्हाट वी वांट टू डू, हमें सोचना चाहिए कि हाउ वी एडजस्ट एंड अकोमोडेट दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ पैकेज जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया इनटू द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पैराडाइम, जिसके बाद अब आप कहेंगे डॉक्टर बाबा ने एक और मुश्किल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चीज बता दी. अब ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या बला है, तो ये आपको भी दिखाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. हाउ मेनी ऑफ यू इन दिस रूम, इफ आई मे आस्क, हैव सीन दिस डायग्राम?
वो मेरे 2-3 दोस्त मुझे पता था जिन्होंने हाथ खड़े करने हैं. बट द लार्जर बॉडी इन दिस रूम दे डोंट नो व्हाट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. सुनने में आ रहा है ना ये लफ्ज? किसी लेक्चर में, किसी रीडिंग में, किसी आर्टिकल में, किसी पेपर में, अखबार में, खबरों में, मिनिस्ट्री में जो लोग जाते हैं, ये सुनने में आ रहा है लफ्ज. तो ये है क्या? व्हाट काइंड ऑफ थिंग दिस इज? अ न्यू जार्गन. इसको मैं न्यू जार्गन कहता हूँ. इफ अली मेरे से नाराज ना हो तो न्यू जार्गन है ये. अब ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज अ क्यूब, और मैं थोड़ा सा इस माइक से हटूंगा और अपनी आवाज को लाउड करूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं ये है क्या. हम चाहते हैं कि ये जो सफेद वाला डब्बा है, इसके अंदर ये नीला वाला डब्बा पूरा भर जाए. ठीक है, लेकिन इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? हम इस वक्त ये नीले डब्बे में है ना. आपको पता है क्यूब की 3 डायमेंशंस होती हैं. एक डायमेंशन ये है जिसमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, एक्स पॉपुलेशन, तो हम उस पॉपुलेशन को कितना कवर कर रहे हैं. तो ये गैप है. ठीक है, हम इतनी पॉपुलेशन को सर्विसेज दे रहे हैं, इतनी को नहीं देनी चाहिए. ये क्या है? सर्विसेज. और इसमें आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस ले आए जो पिछली स्लाइड पे दिखाई थी. हमें इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, इतनी देनी चाहिए. और अब आप आ जाए इधर. इन सर्विसेज को लेने के लिए ये पॉपुलेशन अगर हो तो इस पे ये कॉस्ट आ रही है, जबकि यहां तक होनी चाहिए. अब वो मेरी जेब से जा रही है, या गवर्नमेंट दे रही है, या सेहत सहूलत प्रोग्राम दे रहा है, या इंसाफ कार्ड दे रहा है, या कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, whosoever. तो ये जब तीनों गैप्स भर जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये नीला डब्बा जो है ये इस सफेद डब्बे को, क्यूब को पूरा भर देगा. तो हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव कर लेंगे. ठीक है, अब भूलोगे तो नहीं. तो ये आसान तरीका है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को समझने का. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज रेलेवेंट बिकॉज हमने ये देखना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितने लोगों तक पहुंच रही है और कितने बाकी हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ पैकेज जो आपको पहली स्लाइड पे दिखाया, उसमें से क्या क्या कवर हो रहा है और क्या क्या सर्विसेज ऐड होना बाकी है. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ये सर्विसेज इतनी पॉपुलेशन को ऑफर करने के लिए जो कॉस्ट आती है, उसमें कितना गैप है, वो कैसे फिल करना है. So this is very much relevant to these times when we are talking about achieving universal health coverage by 2030, sir, if I am not wrong. And 2030 में कितने देर रह गई है? 5-6 साल, 7 साल. अच्छा, करें क्या अब? मैं सोचने लगा, मैं इनोवेशंस में क्या बताऊं. What do we exactly mean by innovation? और ये सेशन का टॉपिक है इनोवेशन. डू वी नीड न्यू मेथड्स? तो हम डीकेटी से कहेंगे भाई मेल मेथड से अब आगे भी चलो, मथीरा की जगह कोई और मॉडल भी लाओ. तो अरूसा नाराज हो जाएगी क्योंकि बजट नहीं है मेरे पास, मैं अगले बजट साइकिल में डालूंगी ना किसी को. हम अपना सर्विस डिलीवरी सिस्टम इनोवेट करें. हम अपनी एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ सर्विसेज को इनोवेट करें. हम अपनी प्रोविजन ऑफ केयर या स्टाइल ऑफ प्रोविजन ऑफ केयर, जिस तरह से हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको इनोवेट करें. हम अपनी काउंसलिंग टेक्निक्स को इनोवेट करें. और डॉक्टर साहब बैठी हैं विद वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड शी नोज हाउ गुड काउंसलर्स वी आर. और लोग हमसे कितना खुश होके जाते हैं, खास तौर पे सरकारी अस्पतालों में. और हमारा एटीट्यूड और हमारे बात करने का स्टाइल है जो उनको सरकारी अस्पतालों से पिछले 30, 35, 40 सालों में दूर ले गया, और वो मजबूर हो गए हैं प्राइवेट अस्पतालों में जाने से, क्योंकि वहां उनके साथ प्यार से बात की जाती है, एम्पैथी के साथ बात की जाती है. हमें पता ही नहीं काउंसलिंग होती क्या है. टाइम नहीं है हमारे पास काउंसलिंग करने का. डॉक्टर साहब रहे हैं पॉपुलेशन में, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट पिलर है काउंसलिंग. उसको इनोवेट करें.
ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोचेस, बड़े बड़े टर्म्स हैं, लिटरेचर में मिलती हैं आपको। ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोचेस, तो भाई जो आया वो ह्यूमन है ना, उसको तवज्जो दो, तवज्जो से सुनो, तवज्जो से उसकी बात समझो और उसको ह्यूमन समझ के बाद समझाओ। क्या रॉकेट साइंस है इसके अंदर, क्या इनोवेट करना है हमने इसके अंदर। और उसके बाद पेंडेमिक रिस्पॉन्सेस, जो पेंडेमिक ने पोस्ट पेंडेमिक टाइम्स में जो सिचुएशन आ गई है, thousands of health facilities and service delivery outlets have been washed away. Sindh, Balochistan, parts of KP, where people could have resorted to seek reproductive health and family planning services. People have lost their livelihoods. People have economic challenges. आपके कॉन्सेप्ट नोट में लिखा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर एक्सपेंसिव। दे आर नॉट एक्सपेंसिव। मैंने उसको सर्कल किया, बट आई डोंट नो किसने लिखा है ये कॉन्सेप्ट नोट। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन पाकिस्तान इज नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान has been the major forefront financier of reproductive health and family planning in Pakistan. Or public sector is free of cost. It is access which makes it expensive. Reaching to that facility is expensive, and that is even a bigger challenge now in the post-pandemic times. So we think we need to think on this. Next, please, sir. अच्छा, फिर किताबें देखी कुछ मैंने, ठीक, मैंने कहा जाके बोलना है तो कुछ पढ़ भी लो भाई। ये इनोवेशन में दुनिया में क्या हो रहा है, बड़े बड़े वहाँ लोग होंगे, डॉक्टर साहब उस्तादों की जगह है हमारी मैडम, तो कुछ इनोवेटिव चीजें देखो क्या हो रही हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैमिली प्लानिंग में। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। बट एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ डिसीजन मेकर, as a service provider, as a program manager, as a development partner, सोचने वाले पॉइंट्स ये हैं। मैंने कहा मैं नहीं लेके जा रहा एग्जांपल्स, दुनिया में क्या हो रहा है फैमिली प्लानिंग को लेके, रिप्रोडक्टिव, मैं नहीं लेके जा रहा एग्जांपल। आप खुद पढ़ सकते हैं, गूगल करें, बिकॉज यू आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग गूगलिंग, तो करें गूगलिंग। मैं क्यों पढ़ाऊं यहाँ खड़ा होके। सोचने वाली बात यह है, क्या हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो इनोवेशंस फिट इन होंगी। आई फील ब्लेस्ड सिटिंग इन दिस रूम, जब मैडम मैंने आपकी प्रेजेंटेशन सुनी है, एंड दीज ऑल गर्ल्स शुड फील ब्लेस्ड जब आपने वो दिखाया कि हाउ अ वुमन इन सिंध एंड बलोचिस्तान स्ट्राइव्स विद हर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज एंड चैलेंजेस। यू शुड ऑल फील ब्लेस्ड, और अल्लाह का जितना आप शुक्र अदा करें वो कम है। क्या वो रेलिवेंट है इनोवेटिव अप्रोचेस हमारे सिस्टम के साथ, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कल्चर के साथ? क्या उनकी एक्सेप्टेंस होगी, डिमांड होगी? क्या वो इनोवेटिव अप्रोचेस हम इंट्रोड्यूस कर दें, उन तक रसाई होगी, एक्सेस होगी? क्या उसकी कॉस्ट मुझे अपनी जेब से बेयर तो नहीं करनी पड़ेगी? बिकॉज इस मुल्क में हेल्थ खरीदनी पड़ती है। जब तक सेहत इंसाफ कार्ड है, जब नहीं है तो हेल्थ खरीदनी पड़ती है। इस मुल्क में मिलती नहीं है आपको, अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर खरीदनी पड़ती है। somebody has to bear the cost. Who will ensure quality, who will ensure supply, and who will ensure, तो मुझे कहना मुश्किल लगता है, who can we ever talk about in my life, in many of yours lives, integration. And when I say integration, many of you should know कि health और population दो अलग-अलग डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में। और हेल्थ कहता है कि फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नॉट माय बिजनेस, और पॉपुलेशन कहता है वी आर अंडर रिसोर्स्ड। तो dilemma continues after the 75 years of the birth of Pakistan. तो मैंने कहा मैं क्या बात करूंगा। Now this is the last part of my presentation. वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ तो बताना है ऑडियंस को कि आगे कैसे चलना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इस टर्म को हम मजीद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं।
तो चूंकि I am a person of health systems, I have worked almost all my life in health systems and कुछ पॉलिसी में भी कंट्रीब्यूशन किया है, तो मैं तो सिस्टम्स अप्रोच की बात करता हूँ। और सिस्टम्स अप्रोच में बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि WHO के 6 पिलर्स जो है हेल्थ सिस्टम के वो ऑब्सोलीट हो गए। मैं कहता हूँ नहीं, ऑब्सोलीट नहीं, दे आर वेरी मच रेलेवेंट। एटलीस्ट जब तक पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर लेते, तो 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ सिस्टम या बिल्डिंग ब्लॉक्स of health systems are very relevant। तो मैं अगली 6 स्लाइडों में आपको 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाने जा रहा हूं। हमें ठीक क्या करना है? When we say that we have to put our house in order, what do we do? पिछली स्लाइड पे रहने दें सर, मैंने अभी बोला नहीं उस पर। इनोवेशन पहला बिल्डिंग ब्लॉक है गवर्नेंस एंड लीडरशिप। ये किसके पास है? सरकार के पास है। और सरकार को सोचना है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैमिली प्लानिंग का क्या करना है, इसका किबला कैसे सीधा करना है। मैंने आपने एडवोकेसी करनी है, हम रिसर्चर्स हैं, हमने एविडेंस देना है उनको। ओनरशिप, स्टीवर्डशिप, लीडरशिप सरकार के पास। सो दे हैव टू प्रायोरिटाइज, दे हैव टू बी सेंसिटाइज्ड, they have to be mobilized, and they have to put this on priority। जब कोविड आया इस मुल्क में, तो पहले 6 महीने के अंदर जो कोविड से मोर्टेलिटीज हुई, मैंने उस वक्त एक पेपर लिखा कि शोर हम बहुत मचाया कि कोविड से पहले 6 महीने में पहली वेव इतनी जाने ले गई। मैंने एक पेपर लिखा, क्या किसी ने ये देखा कि उसी दौर में, उसी वक्त पे, उसी टाइम पीरियड में मैटरनल मोर्टेलिटी कितनी हुई है? कोविड से तो लगभग मरे थे ना लोग, लेकिन उसी टाइम पीरियड में मैटरनल मोर्टेलिटी कितनी हुई है और नियोनेटल मोर्टेलिटी कितनी हुई है उसी टाइम पीरियड में। तो बात है फोरफ्रंट पे लाने की, प्रायोरिटी की। उस वक्त प्रायोरिटी इंटरनेशनल, ग्लोबल और बज़वर्ड कोविड था, और दूसरी कॉजेज ऑफ मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी नहीं थी। नेक्स्ट प्लीज। फाइनेंसिंग, पैसे चाहिए, बट मैंने कुछ अरसे से वर्जन अपना चेंज कर दिया। पहले मैं कहता था ज्यादा पैसे चाहिए, अब मैं कहता हूँ ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बिकॉज जो पैसे मिलते हैं हम वो भी खर्च नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब नोस, वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम फॉर जुडिशियसली एंड ट्रांसपेरेंटली एंड टाइमली यूजिंग आवर फंड्स जो हमें मिलते हैं। वो भी अगर हम कर लें जो बजट मिलता है, तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ मिरेकल्स। टाइमली रिलीज हो जाए, टाइमली स्पेंड हो जाए, जुडिशियसली स्पेंड हो जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैमिली प्लानिंग पे, तो वो भी बड़ी बात होगी। सो आई एम नॉट आस्किंग फॉर मोर मनी, आई हैव चेंज्ड माय वर्जन फॉर सम years now, sir. The money which is allocated has to be released and spent judiciously. ये है इनोवेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। सर्विस डिलीवरी में इनोवेशन चाहिए हमें? मुझे नहीं लगता रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में कोई बड़ी रॉकेट साइंस और बड़ी कोई एक्सपेरिमेंटेशन की मजीद जरूरत है। वी हैव टू पुट टुगेदर आवर रिसोर्सेज, offer a reasonable basket of service according to the demands of the communities, and offer them in a very empathetic manner. And the larger network of service delivery outlets lies with health department, not with population. So somebody at some point in time has to take this decision very firmly, that health department must take this reproductive health and family planning in the basket of their services. It is not the mere responsibility of population department. कोई इनोवेशन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट प्लीज। वर्कफोर्स, वी हैव वर्कफोर्स, मिडवाइफ्स भी हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स भी हैं। चलो कोई बात नहीं, पंजाब में सर अगर खत्म होगी, मैंने पूछा है वैसे क्यों पंजाब में डाइंग कार्ड रहा है, अभी जवाब आ जाएगा। लेडी हेल्थ वर्कर है आपके पास, 95-96,000 लेडी हेल्थ वर्कर है।
60% से ज्यादा उसका कवर्ड एरिया है। हर यूनियन काउंसिल में एक बेसिक हेल्थ यूनिट है। आपकी 5,500 यूनियन काउंसिल है पाकिस्तान में, तो 5,500 बेसिक हेल्थ यूनिट है आपके पास। और बहुत सारे बेसिक हेल्थ यूनिट याद रखें अब BHU प्लस हो गए हैं, विच मीन्स वो 24/7 चलते हैं। सो उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, वहां इनोवेशन चाहिए। वहां पे जो वर्कफोर्स है उसको मोटिवेट करना है, उसको इंसेंटिवाइज करना है, उसको कैरियर स्ट्रक्चर देना है। CMW क्यों डाइंग का ऑर्डर जा रहा है 1-2 जगहों पे प्रोविंसेस में? उसका कैरियर स्ट्रक्चर नहीं है, उसको रोड मैप नहीं दिया गया। उसने करना क्या सारी जिंदगी वो कम्युनिटी मिडवाइफ रहेगी? लेडी हेल्थ वर्कर सारी जिंदगी लेडी हेल्थ वर्कर रहेगी? सो ये बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं विच नीड आंसर्स। बाकी आपकी फैसिलिटी बेस्ड वर्कफोर्स है, यू हैव टू थिंक इनोवेटिव मॉडल्स। एक ही जगह पे उसको साल पोस्ट आउट करके रखेंगे तो कौन मोटिवेट रहेगा? आप रोटेट करें, आप ट्रेनीज को भेजें, PG ट्रेनीज को भेजें, मास्टर स्टूडेंट्स को भेजें, रोटेशन रखें और वहां पर हेल्थ फैसिलिटी में एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें उसके लिए, ताकि वर्कफोर्स दिल से काम करे। क्यों जब वही आउटलेट्स, वही हेल्थ फैसिलिटीज हम कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है? क्यों? मैसेज है, क्लियर है मैसेज। नेक्स्ट प्लीज। प्रोडक्ट्स एंड सप्लाईज, अगेन we are short of products. We run stockouts at health facilities. मैडम, एक औरत जो मीलों का सफर पैदल चल के आती है क्योंकि उसके फैमिली प्लानिंग के टीके का टाइम है, और वो घर का काम काज छोड़ के आती है, बच्चों को किसी के हवाले करके आती है। आई एम टेलिंग यू अ रियल स्टोरी। जब वो हेल्थ फैसिलिटी पहुंचती है अपना टाइम पे टीका लगवाने के लिए 2 महीने या 3 महीने के बाद, तो पता लगता है टीके खत्म है। डॉक्टर साहब, दिस इज एन आयरनी, दिस इज द फैक्ट। जब उसका गोलियों का पत्ता खत्म हो जाता है, 28 गोलियों का, और दूसरा पत्ता भी खत्म हो जाता है और तीसरा पत्ता भी खत्म हो जाता है, और वो सप्लाईज के लिए आती है, तो शी डिडंट गेट द सप्लाईज। सो आपकी सप्लाई चेन एक नई साइंस है हेल्थ के अंदर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अनइंटरप्टेड सप्लाईज, एड्रेसिंग द रीजंस ऑफ स्टॉक आउट्स। सो इसमें क्या इनोवेशन है, क्या मैं आपको बताऊं नई चीज इसके अंदर? यू हैव सिंपली टू एंश्योर योर सप्लाई चेन इज अनइंटरप्टेड। अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिसर्च, दिस इज अनदर बिल्डिंग ब्लॉक, और मेरा ख्याल है ये आखिरी है। आपकी हेल्थ फैसिलिटी से इंफॉर्मेशन आ रही है पेशेंट्स की, DHIS में आ रही है, कहीं कहीं पे DHIS चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा, कहीं पे रिसर्च हो रही है, कहीं पे अच्छी रिसर्च भी हो रही है, क्रेडिबल रिसर्च भी हो रही है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इनोवेशन कुछ नहीं है इसमें। द मैटर इज all about using that information for decision making. So we, as a advocate of family planning and reproductive health, we need to inculcate the culture of use of information in the policy arenas, जहां पर बैठ के लोग फैसले करते हैं, हेल्थ सिस्टम्स के, सर्विस डिलीवरी के, वर्कफोर्स के, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के, प्रोक्योरमेंट के, सप्लाई चेन के फैसले होते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो जनरेट कर रहा है आपका सिस्टम या कोई रिसर्चर, उसको प्राय मेहरबानी उसको यूज करें उस इंफॉर्मेशन को। इसमें क्या इनोवेशन? थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। मैं अब इससे ज्यादा इनोवेट नहीं कर सकता रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है। I welcome if you have any questions or comments. हाँ दें जी, डॉक्टर साहब को माइक दें।
Ji, this is Dr. Shafqat Shehzad. Thank you, Dr. Babar, for very useful information. आपने जो एक कमेंट किया कि मैं अब लाइक आफ्टर इयर्स इस चीज के ऊपर आ गया हूँ कि हम अपना जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हम उनको ही यूज कर लें और ज्यादा पैसे नहीं लें. सो आई थिंक आई एम द सेकंड, आई विल एंडोर्स योर ओपिनियन अबाउट इट, बिकॉज मेरे ख्याल में कि हम लोगों ने इकट्ठे बहुत ज्यादा अपना रिसर्च का एकेडमिक का सफर इकट्ठे तय किया और मेरे ख्याल में मैं भी कुछ सालों के बाद आपकी इस ओपिनियन से एग्री कर रही हूँ कि जब मैं सोचती हूँ कि हमारे इकोनॉमी के इतने बुरे हालात हैं और हम वी आर लाइक यू नो ऑल द टाइम आस्किंग फॉर मोर मनी फ्रॉम डोनर्स फ्रॉम एवरीवेयर. हमने ये एक तो ये हमने नहीं सीखा कि हमने अपने कदमों पे कैसे खड़ा होना है और अपने रिसोर्सेज के अंदर कैसे रहना है. और दूसरा एज एन इकोनॉमिस्ट, बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब when I sit alone and I think about the reasons कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी failures कहाँ पे हैं, so I totally agree with Dr. Babar's opinion कि हमें one thing is that we have to really need to control our wastage कहाँ पे हो रहा है. और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो अंडर स्पेंडिंग होती है किसी भी बजट की, एलोकेटेड बजट की, that is a big reflection of your inefficiency. इसका मतलब है कि आपने अपने जितने भी आपके पास resources थे, you were not able to exhaust the existing resources. So somehow वो leak out हो गए, वो waste हो गए, और वो जो wastage है, that is like you know उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में उन reasons को कोई address नहीं करता. तो अच्छी बात है कि हम इस चीज को आगे लेके चलें कि ये जो हमारे एग्जिस्टिंग वेस्टेजेस हैं, लीकेजेस हैं, जो हमारी अंडरस्पेंडिंग है, हम उनको कंट्रोल करें और अपने बजटरी प्रोसेस को इम्प्रूव करें. थैंक यू वेरी मच. Thank you for your comment, Dr. Shafqat. Really appreciate. I agree with you, Dr. Babar. I have an experience of 33 years working with the public sector. तो इसलिए first I would like to endorse your saying कि हमारे पास shortage of fund का issue नहीं है, usage of fund का issue है. पैसे एक तो टाइम पे रिलीज नहीं होते, शुरू में ग्रांट्स डिपार्टमेंट जो है वो होल्ड करके बैठे रहते हैं, और जब होते हैं तो फिर उसके बाद टाइम इतना शॉर्ट होता है कि वो पैसे लैप्स कर जाते हैं. उसमें गवर्नमेंट की अपनी कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसीज हैं. जो मैं आपसे रेज करना चाह रहा था पॉइंट, मतलब मैंने पॉपुलेशन में भी काम किया, हेल्थ में भी काम किया, प्रोविंशियल लेवल पे भी काम किया, फेडरल लेवल पे भी किया. तो गवर्नेंस जो है दोनों डिपार्टमेंट्स की, दैट इज अ मेजर इशू. मैंने कुछ फोरम्स पे इस चीज़ को रेज भी किया कि हमें ज़रूरत है रीडिफाइन करने की द रोल्स ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट्स. बिकॉज हेल्थ का जैसे आपने कहा कि 5000 प्लस हमारे पास BHUs हैं, RSCs हैं, THQ हॉस्पिटल हैं, DHQ हॉस्पिटल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके पैरेलल में पॉपुलेशन वालों को दे डोंट नीड टू डेवलप अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर. बट आई थिंक इज आई वुड लाइक टू डॉक्टर अली, आप भी आई डोंट नो यू आर वर्किंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन वर्ल्ड बैंक में, तो आई डोंट नो इफ वी कैन एडवोकेट समवेयर कि सर्विस डिलीवरी शुड बी टोटली द डोमेन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. पॉपुलेशन को आप उनकी ट्रेनिंग दे दें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दे दें, प्रोक्योरमेंट जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की है वो दे दें, मे बी एडवोकेसी जैसे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हैं वो दे दें, तो रोल्स को रीडिफाइनर कर दिया जाए और सर्विस डिलीवरी टोटल हेल्थ को दे दी जाए. तो आई थिंक दैट कैन बी, जो हमने यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस की बात की है और ओनरशिप की बात की है आपने, तो ये इश्यूज हल हो जाएंगे. बिकॉज अभी वो हेल्थ वाले कहते हैं जी ये पॉपुलेशन का डोमेन है, उनकी अपनी सर्विस आउटलेट्स हैं, उनके अपने बंदे हैं, सर्विस डिलीवरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनका काम है, हमारा नहीं है. तो एक ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा. और सेकेंडली मेरा ख्याल है कि इसमें कवरेज की जो बात है वो दैट विल गो बेटर. आई डोंट नो हाउ डू यू कमेंट अपॉन इट. I absolutely concur with you and your thoughts. There's a need to redefine. और ये बड़ा पर्टिनेंट वे फॉरवर्ड है कि अगर पॉपुलेशन और हेल्थ ने इंटेग्रेट नहीं होना, और हमने तो मर्जर का लफ्ज़ कहना छोड़ दिया अब, तो ये है कि रोल्स डिफाइन कर दिए जाएं, TORs डिफाइन कर दी जाए. एब्सोल्युटली, गिवन द
network of health facilities and given the number of human resource जो health departments के पास है, service delivery should go to health department. Policy making है, advocacy है, procurement है, training आपका forte है, वो population के पास रहे. लेकिन service delivery, this is absolutely, I totally agree. This is the way forward. And I keep on saying these words and I keep on communicating these thoughts wherever, in whichever forum I get the chance to do that. But let's hope one day there is some silver lining. Sir, if I may just add a few words from my understanding of this session. First of all, I'm very glad that you are here. There are many people who claim to be system experts, but there are very few in Pakistan. Let me just say that for starters. Secondly, all the points you've raised are extremely critical. UHC, by the way, and Babar Saab has given extensive input in developing the UHC package that Pakistan is actually doing. You're absolutely right. 6 years is a very, very short amount of time, but glass half full. Pakistan is one of those rare countries which gets really ahead of the curve in developing things. Somewhere along implementation, we just slack off. In 1979 Almata Declaration, Pakistan was one of 5 countries which built infrastructure based on that declaration for health of all the way down to the Union Council. Very few countries managed that. Implementation ke saath kya hua? Separate thing. So let's not think कि हम नहीं कर सकते. Even now, Pakistan, I think, is ahead of the curve as far as the region is concerned in developing a costed essential package for health services. Sir, ki jo point hai about service delivery, all of these things, well, if you look at it in the context of implementing UHC, this is the first time in my 20 years that I'm seeing an option for service delivery reform, financing reform. And I should be very careful when I talk about financing. My colleague, very competent health economist from the World Bank, is sitting at the back. He has a session today. I hope you guys will get a chance to attend it as well. Fiscal space is an issue, but the inefficiencies that Dr. Babar pointed out, such as the one that you're also talking about, sir, these are very real. But the question is, no amount of advocacy can replace the governance structure which has to make that call. And the kind of political economy which underpins those kind of things is, well, I'll just stop there. Thirdly, thank you, Neha, for bringing in the idea of climate change. Now, one of the things, and Babar Saab was heavily involved in the conversations right at the beginning of the COVID pandemic and at NCOC in terms of exactly how we're going to manage this pandemic where many, many countries with very developed health systems are failing. We did. It was very ad hoc, but I can assure you, there are system capacities which do exist, which can be capitalized on. How? That's a much more involved question. I hope Babar Saab remains engaged on this subject. I was very sad to hear that you left the think tank because it had a certain attention that it grabbed at the political level. But every single point of the 6 building blocks of the health system that Babar Saab has pointed out, very crucial. And I hope that the students of HSA as well will start focusing along those lines. I think Babar Saab had once gone through a whole list of grey literature, which never got published by the students of HSA, which was extremely useful to anyone thinking about this. And let me, Assalamu alaikum, Dr. Shafqat, it's been a while since we've met, and I'm very glad this panel pe ek health economist please present kar raha tha, because as they say in rather crude terms, money talks. So I'll just stop here. Anyone else? Thank you very much, Dr. Babar. आप तशरीफ रख सकते हैं. बहुत शुक्रिया. We are closing the session. और before I go to the formal closure of the session, मैं भी अपने comments दे दूं कि ये सुनना एक पाकिस्तानी के तौर पर कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसे खर्च नहीं कर सकते, कितना ये पेनफुल है. इस कदर मतलब तकलीफ दे ये बात है. और जब से मैं HSA में हूँ, ये मैंने दूसरी दफा सुना. और जनाब ने जहाँ कहा कि बात खत्म करता हूँ, एक्चुअली हमें बात वहां से शुरू कर रही है. ये सब खेल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है. हम कब बड़े होंगे और कब बोलेंगे? इतने बड़े लिखे लोग हैं, इतना हमारे पास अगर इतना पैसा है,
बहरहाल मैं तो उस इकोनॉमी या उस सेक्शन में नहीं रही, लेकिन ये बार बार सुनकर इंतहाई तकलीफ का सामना है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी सेकंड हाईएस्ट है दुनिया में। बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है, और आपकी न्यूनेटल मॉर्टेलिटी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इनोवेशन तो हमको लाना है। वही बात है सर्विस डिलीवरी में लाइए, जैसे बात हुई मिडविफरी की, क्यों नहीं आप लो कॉस्ट पे काम कर। हमें ये सीखना है कि हम करते के बोझ तले कौन। हमें यूएसए यूके को नहीं फॉलो करना है उन रिस्पेक्ट्स पे, वेस्ट को नहीं फॉलो करना है उन रिस्पेक्ट। आप देखिए अपने नेबरिंग साउथ एशिया कंट्रीज को, मैटरनल मॉर्टेलिटी इज डाउन लाइक दिस। श्रीलंका की इकोनॉमी में तबाही फिर गई होगी, लेकिन maternal mortality, because of the scaled birth attendants, they have reduced from 1990 to a straight graph down to 2020. तो बहरहाल कुछ बातें करना मेरी आदत है, लेकिन ये जरूरी भी होती है। पब्लिक हेल्थ के अलावा पाकिस्तानी के लिए बड़ी जरूरी है। So you must think of low cost innovations जब आप प्रैक्टिस पे आए, यही हमारा फ्यूचर है। चलिए, जब और खर्च करने से जब इस सबको सुना दूं कि कानून का खजाना भी खत्म हो जाता है, तो इसलिए हमें लो कॉस्ट इनोवेशन पर ही आना है। Coming to the closure of this session, as discussed, I'm extremely grateful to the speakers, and we are highly delighted that all aspects in terms of digital innovation, really a brilliant idea, and again, a low-cost idea. Whatever low cost is welcome. Neonatal mortality pay, you highlighted the different areas which were again sort of news for us in aspects that in Punjab it's very high and very unfortunate. And of course, Neha has been the star of the day, that we have been talking about midwifery and low-cost innovations again and again. And जैसे उन्होंने कहा कि तारुफ खुद बाहर हवा की है, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही कंसाइज तरीके से डॉक्टर साहब ने एक्सप्रेस किया. और so thank you very much for very useful comments and all the comments which we got. And I think now the time for the mementos from the HSA to be given. Certificates. And now we are concluding the session. Certificates to the speakers. Miss Rusa, please. इसको ऑफ नहीं कर, पहले ग्रुप फोटो बनवा लें. And Miss Amna, please next. आपने स्टे करना है ग्रुप फोटो के लिए. I know Miss Neha, as ma'am said, star of the day. Yes. A big hand. And now the please sir, do the honor for ma'am shield distribution. Ma'am, sir को की लिखा for our keynote speaker. तो पहले मैम आपको दे देती हूँ. एक और देना.
And for the co-chair, please, Dr. Ali Said. For the co-chair, sir, Dr. Ali. About the ceremony. And sir, please do the honor for giving our discussion, Madam Brigadier Dr. Amreen Arwar. अब एक मेरी बोलना. And a certificate for our coordinator, Dr. Iram Yasir from Al-Hafiz and PhD fellow. अब आप लोग सर्टिफिकेट ले लो. नहीं है ना चाहिए. हाँ चलें. Sir, अभी group photo के लिए please stay करना है. And certificates for our rapporteurs, sir. These girls were working so hard day and night. Dr. Nayab. Ma'am, please. Dr. Aksa. हाँ क्यों नहीं आप लोग इतना काम कर रहे हो अपना सर्टिफिकेट खुद लेके जाओ. And the Rabia, please. So without them, it's not possible to have it successful. And a group photo, please. Please,